Hello, friends, and welcome to Aaras Kitchen. Hope you guys are doing good and enjoying the festive season and the holidays of the Christmas. I'm here with very delicious and this time a real healthy recipe for you guys. It's a little bit different but very easy to make with ingredients easily available in your kitchens. It's called vegetable pulao. It's full of vegetables. It can be made with brown rice and white rice. I'm going to serve it with salad. So let's get started with ingredients. I have very limited ingredients here. Very thinly chopped onion, very thinly chopped ginger and green chili, 2 tomatoes pureed, and I have some boiled vegetables. I have cut carrot, potatoes, cauliflower, corn kernels, and green peas. You can choose vegetables of your choice. You can use them as per the availability. I have tomato, cucumber, and onion for salad. So let's get started. I have pan heated here to which I have added 1 tablespoon of oil. I'm using vegetable oil. You can use oil of your choice. Into the oil, I will add very thinly chopped ginger and green chilies. मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे. मैंने उसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल जिसमें मैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक डाल रही हूँ. आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, बट फॉर नाउ आई विल स्किप गार्लिक. जैसे ही ये क्रैकल होंगे उसके बाद हम इसमें अनियंस डालेंगे और इसे सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट तक. Once the ginger and green chilies crackle, we will add onions, very thinly chopped white onion I'm using here. You can use onions whichever you like. You can also use spring onions if you like in this. But I'm using white onion, and we will saute light white onion on the medium to high flame for around 2 to 3 minutes. We want a translucent color, not very dark. We just need the crunchy effect. This is how it looks after 3 minutes. It's the time to add tomato puree. I have taken 2 tomatoes, I've peeled them and I've pureed them. अब हम इसमें मिला देंगे टमेटो की प्यूरी. 3 मिनट तक अनियंस को पकाने के बाद. हमें अनियंस का कलर चेंज नहीं करना है. फ्लेम मीडियम से लो पर है. अब इस टमेटो प्यूरी को हम सौटे करेंगे जब तक ऑयल ooze out ना हो. Now after adding the tomato purees, we will saute it for a few minutes till the oil starts oozing out and the water evaporates. We have to cook it again on the medium to high flame. Keep stirring it so that the tomato puree doesn't stuck to the bottom. This is how it looks. This is very flexible recipe, as I said. If you want, you can add garlic. I'm skipping the garlic, and you can choose the vegetables that you have available at your place. It's quite flexible. While soaking the rice, I have added hot water, like lukewarm water, and I had added 2 cloves and a bay leaf to it, which I will remove while cooking. Meanwhile, I'm adding some spices to it. I've added salt, red chili powder, kitchen king masala, coriander powder, turmeric powder, and I will mix it. अब हमने इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं. मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, क्योंकि हमें इसे ऑरेंज कलर चाहिए. तो टमेटोज और थोड़ी सी हल्दी मिलकर ऑरेंज कलर देंगे इस पुलाव को. अगर आपको ऑरेंज कलर ना पसंद हो तो आप इसमें रेड फूड कलर या रेड ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं. We have to cook it for a few minutes, and then we will add half boiled vegetables to it. I have not boiled these vegetables to whole. I've boiled it to 50% because the remaining part of the vegetables will be cooked with the rice. We'll give it a nice mix. मसाले डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे. जैसे ही ऑयल टमाटोज में से अलग होने लगेगा, हम इसमें डाल देंगे हाफ बॉयल की हुई सब्जियां. ध्यान रहे, इन सब्जियों को हमने हाफ बॉयल किया है, 50% तक बॉयल किया है. बाकी की जो सब्जियां हैं वो गलेंगी चावल के साथ. अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी. Now I'm adding कस्तूरी मेथी to it. Give it a nice mix. अब सब्जियों को थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इसमें डाल देंगे भिगोए हुए चावल. जैसे मैंने आपको कहा कि चावल को मैंने थोड़े से गर्म पानी, तेज पत्ते और लौंग के साथ भिगा के रखा था.
तेजपत्ता और लौंग हम निकाल देंगे क्योंकि इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए गरम मसाले का। अब हम इसे अच्छी तरह से चावल डालकर मिक्स कर देंगे। Once vegetables crackle and they're mixed with tomatoes and spices, I will add soaked rice. I will remove the water and add soaked rice and mix it and then add water. The quantity of water should be double to the quantity of the rice. Yes, we have to add the double the quantity of rice because there are some vegetables also and they will just boil with the rice, so we need enough water for them. Keep the rice and let them cook on medium to high flame for around 7 to 8 minutes. चावल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी की मात्रा दुगनी होनी चाहिए चावल से। अब हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, बाद में कवर करेंगे। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं हम सैलड बना देंगे। मैंने क्यूकम्बर, टमेटो और प्याज को काट लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर हम मिक्स कर देंगे और हमारा सैलड रेडी है। While my rice are cooking, we will just make salad quickly to serve it with the rice. I have cut tomatoes, cucumbers and onions in the same shapes. I'm adding some salt, black pepper powder, white pepper powder and red chili powder, very tiny little bit, few drops of lemon, and I'm adding amchur powder, that's a mango powder. Once these things are there, you have to mix them well and we will serve them with rice. Quick, delicious, healthy salad is ready. If you want, you can add beetroot or some other kind of salads to it. That's absolutely fine. हमारा सलाद तैयार है। Now let's have a look at the rice. Rice are cooked, they're nice, and the rice grains look separated. All the vegetables are cooked as well. It's time to serve. अब हमारे चावल पककर तैयार हो चुके हैं। चावल के दाने बिल्कुल सेपरेटेड हैं, उन्हें मैश नहीं करना है, ध्यान रखें, और सारी सब्जियां भी पक चुकी हैं। अब हम इसे प्लेट में सैलड के साथ सर्व कर देंगे। गार्निश करेंगे हरे धनिया के पत्तों के साथ। Now the rice is ready. I'm serving them in a plate with some salad, lemon slice, and I will garnish it with some coriander leaves. You can serve the rice with yogurt or bundi raita or any serving of your choice. I hope you guys like this recipe and I hope you will love it. Kids will like it. Please try to make it and share your comments and let us know what else you would like to see on our channel. Till then, keep supporting the channel. Eat healthy, stay healthy, and take good care of yourself. Thanks for making us achieve the goal of 1,000 subscribers. This channel is for you and because of you. Thanks once again. हम उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे अपनी पसंद की सर्विंग के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे बनाएं ज़रूर और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe and share it with your friends. Your suggestions will be welcomed. Thank you so much.